गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर्स सेशन। आज का पहला टॉपिक है समिट ऑफ द फ्यूचर। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली समिट ऑफ द फ्यूचर को यूएन जनरल असेंबली में अटेंड किया है न्यूयॉर्क में। इस साल जो समिट हुआ था उसका थीम था मल्टीलैटरल सॉल्यूशंस फॉर अ बेटर टुमारो। तो यूएन जनरल असेंबली क्या है? 1945 में से एस्टैब्लिश किया गया अंडर चार्टर ऑफ यूएन और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में। वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूएन की। मेन पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है एक्चुअली में ये यूएन का, और ये यूनिक फोरम है मल्टीलैटरल डिस्कशन के लिए। हर मेंबर को यहाँ पर एक इक्वल वोट होता है। और क्या डिसीजंस लेता है यूएनजीए? तो ऑफ कोर्स सेक्रेटरी जनरल के अपॉइंटमेंट से लेकर नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल को इलेक्ट करना, यूएन के बजट को अप्रूव करना, ये सब यूएनजीए के हाथ में है। तो जनरल डिबेट जो यूएनजीए की होती है वो मेंबर स्टेट्स को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपने व्यूज़ जो है मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़ पर रख सकते हैं। सेक्रेटरी जनरल जो है वो ओपनिंग डे ऑफ द डिबेट को जो है वो जो है रिपोर्ट करते हैं, और उसके बाद से ही जो है ये सेशन शुरू होता है। तो जो 79th यूएन जनरल असेंबली है ये 30 सितंबर तक चलेगी, और ये जो 17 हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उस पर कंट्रीज़ ने कितना एक्शन लिया है उस पर जो है कंट्रीज़ अपना एड्रेस देंगी। तो 79 सेशन जो है वो कैमरून के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा चेयर किया जा रहा है। जो समिट ऑफ द फ्यूचर है उसमें हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट जो है यूएन हेडक्वार्टर्स में मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंजेस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और यूएन चार्टर के प्रति दोबारा से अपनी कमिटमेंट्स को रीअफर्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो उसके ऊपर एम्फोसाइज कर रहे हैं। और आउटकम ऑफ द समिट जो है उसमें पैक्ट ऑफ द फ्यूचर जो है वो निकलेगा। ओके, तो पीएम मोदी ने जो इसको एड्रेस किया है उसमें कहा है कि कलेक्टिवली जो कलेक्टिवली चलने पर ही हमारी जो है ह्यूमैनिटी की सक्सेस जो है लाई करती है। पीएम मोदी ने कहा कि साइबर, मैरीटाइम और स्पेस जो है वो न्यू कॉन्फ्लिक्ट अरीनास की तरह डेवलप हो रहे हैं। तो एक तरह से ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस की ज़रूरत है ताकि हम नेशनल सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इंडिया का जो सक्सेस है कि उन्होंने कैसे इंडिया ने 250 मिलियन पीपल को आउट ऑफ पॉवर्टी निकाला है, वो पीएम मोदी ने जो है वो एक तरह से दूसरों को लेसन दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को, यूएन खासकर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करने का टाइम आ चुका है। जैसे इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को G20 में जो है वो इंक्लूड करवाया था, वैसे ही जो है इस रिफॉर्म्स जो है बाकी इंस्टीट्यूशंस के करने का भी समय है। पीएम मोदी ने कहा है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ब्रिज बन सकता है ग्लोबल गुड के लिए, और इंडिया ऑफर करेगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, लॉ अगेंस्ट चाइल्ड पोर्नोग्राफी इन इंडिया। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दी है जिसमें कहा है कि कंजम्पशन अगर कोई सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट की करता है जिसमें माइनर्स इन्वॉल्व हैं, तो वो एक सिवियर क्रिमिनल ऑफेंस होगा अंडर पॉक्सो एक्ट। तो कोर्ट ने ये भी ओवर रूल की जजमेंट जो मद्रास हाई कोर्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पैसिव कंजम्पशन कर रहा है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा पॉक्सो एक्ट के अंदर। तो पॉक्सो एक्ट है क्या? पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है कंट्री में जो कि 2012 में इनेक्ट हुआ था, और जो स्पेसिफिकली डील करता है सेक्सुअल अब्यूज़ ऑफ चिल्ड्रन से रिलेटेड। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसको एडमिनिस्टर करती है और प्रोटेक्शन करती है चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल असॉल्ट से। तो 2019 में इस एक्ट को अमेंड करके और ज़्यादा पेनल्टीज़ जो है वो स्पेसिफाइड ऑफेंसेस के लिए जो है स्ट्रेंथन की गई थी। तो ये एक जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन है। इसमें एक चाइल्ड जो है, कोई भी पर्सन जो 18 साल से कम एज का है, उसको डिफाइन किया गया है। एक विक्टिम जो होता है पॉक्सो के अंदर, उसको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि उसको कब ये ऑफेंस को रिपोर्ट करना है। वो कई सालों बाद भी जो है वो अपने जो है ऑफेंस को रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, एक्ट फिर फॉरबिड करता है कि विक्टिम की आइडेंटिटी किसी भी फॉर्म ऑफ मीडिया में जो है वो नहीं सामने लाई जा सकती। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इस लॉ के ऊपर, वो सेक्शन 15 जो है पॉक्सो एक्ट का, उसको जो है वो इंटरप्रेट कर रहा है, उसको एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो स्टोर या पोजेस करता है इस मटेरियल को किसी भी फॉर्म में जिसमें कि चाइल्ड इन्वॉल्व है, तो वो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो सेक्शन 15 जो है उसमें कहा गया है कि
जो है सेक्शन 15 का यूज़ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इंटेंट भी है इस तरह का कोई एक्ट करने का, तो उसमें भी जो है वो जो है कोर्ट इंटरप्रेट करके उसको पनिश कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई डिलीट, डिस्ट्रॉय या रिपोर्ट नहीं करते हो चाइल्ड पोर्नोग्राफी की ऐसी कोई भी चीज़ को, तो कोर्ट जो है वो इनडायरेक्टली ये मानेगा कि जो कंसर्न इंडिविजुअल है वो इसको शेयर या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 15। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पोजेशन की जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड कर दिया है। तो कोर्ट ने कहा है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन जो है उसको व्यू, डिस्ट्रीब्यूट या डिस्प्ले करना ऐसे मटेरियल को जो है वो अक्यूज का पोजेशन माना जाएगा अंडर सेक्शन 15, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि इस इशू को आप डील करो, जो टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको बढ़ाकर चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव एंड एब्यूजिव मटेरियल से रिप्लेस करो, और विक्टिम्स जो हैं उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, थेरेपेटिक इंटरवेंशंस, एजुकेशनल सपोर्ट जो है दिया जाए। और कहा गया है कि एड्रेस करो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस को भी, जिसकी वजह से ऐसे बिहेवियर जो है अमंग ऑफेंडर्स आते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने यह भी कहा है कि आइडेंटिफाई करो इंडिविजुअल्स को जिनमें ऐसे प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर्स हैं अर्ली, और इम्प्लीमेंट करो इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज, डी स्टिग्मेटाइज करो रिपोर्टिंग को, और एनकरेज करो विजिलेंस विद इन द कम्युनिटी, डिवाइस करो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ और सेक्स एजुकेशन, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्पाइस्ड स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने स्पाइसेस बोर्ड स्कीम की जो स्पाइस्ड स्कीम है उसको अप्रूवल दे दिया है। ये स्कीम जो है सिग्निफिकेंटली एनहांस करेगी एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस और वैल्यू एडेड स्पाइस प्रोडक्ट्स को अप टू 2025-2026 पीरियड। तो ये फैसिलिटेट करेगी वैल्यू एडिशन और ड्राइव करेगी इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी स्पाइस सेक्टर में। तो इसमें जो एक्सपोर्टर्स हैं जिनके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस है, वो एलिजिबल होंगे असिस्टेंस लेने के लिए इस प्रोग्राम्स के अंडर, और प्रेफरेंस दी जाएगी फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट्स को या फिर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को। तो ये प्रोग्राम जो है उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जिससे कि इंप्रूव की जा सकती है प्रोडक्टिविटी ऑफ कार्डमम और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन ऑफ स्पाइसेस को। तो ये स्कीम एक्टिविटीज़ जो हैं उसमें जियो टैग की जाएंगी, फंड अवेलेबिलिटी, स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंडर, लिस्ट ऑफ बेनिफिशरीज, ये सब स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट पर पब्लिश किया जाएगा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट स्कीम। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो स्कीम 15th फाइनेंस कमीशन के साइकिल के लिए। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट की, जो कि बूस्ट कर रही है टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस डिफरेंट थीमेटिक एरियाज़ में। तो टाइगर और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स इन सब के ऊपर जो है इसका फोकस है। तो इस स्कीम के अंडर 55 टाइगर रिजर्व्स, 33 एलिफेंट रिजर्व्स, 718 प्रोटेक्टेड एरियाज़ और जोन्स ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो बेनिफिट लेंगे। तो इसमें जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ को सपोर्ट करना, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरियाज़ करना, रिकवरी प्रोग्राम चलाना क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ और हैबिटेट्स के लिए। तो ये सब इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी इसी का कॉम्पोनेंट, सब कॉम्पोनेंट है। प्रोजेक्ट एलिफेंट और डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये सब जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट डॉल्फिन या प्रोजेक्ट लाइन दोनों आते हैं, वो सब इसके सब कॉम्पोनेंट्स हैं इस अम्ब्रेला स्कीम के, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को और टाइम देने से मना कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम जो SBI है वो चाह रहा था कि जो केस है या प्ली है वो आउटसाइड तमिलनाडु जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाए, जो कि एक कंज्यूमर ने कंप्लेंट की है, ठीक है, SBI के अगेंस्ट। तो नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन जो है वो एक क्वाजी जुडिशियल कमीशन है, जिसको 1988 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बनाया गया था। ये हेडेड बाय होता है या तो सिटिंग या फिर रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये जो कमीशन है, इसकी जुरिस्डिक्शन होती है कि कंप्लेंट जिसकी वैल्यू 2 करोड़ से ज़्यादा की है और उसको ये एड्रेस कर सकता है, और इसके पास एपेलेट और रिविजनल जुरिस्डिक्शन होती है। तो ये गुड्स और सर्विसेज दोनों को ही कवर करता है। कौन इसमें कंप्लेंट फाइल कर सकता है? कोई एक कंज्यूमर, एक वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या एक से ज़्यादा कंज्यूमर्स, ठीक है, जहाँ पर न्यूमरस कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हों। तो इसमें कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है इसके ऑर्डर से, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है वो अपील फाइल कर सकता है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पल्सर। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन बैंक टेलीस्कोप का यूज़ करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स ने एक न्यू मिलीसेकंड पल्सर टैजन 6 नाम का जो है वो
डिटेक्ट किया है। तो पल्सर्स क्या होते हैं? रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स जो कि पल्सेस ऑफ रेडिएशन को रेगुलर इंटरवल्स पर ब्लास्ट आउट करते हैं। तो इनके जो है मैग्नेटिक फील्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही पावरफुल बीम्स ऑफ लाइट ये एमिट करते हैं, और इनके जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो अलाइन नहीं होते हैं स्पिन एक्सिस से, इसलिए बीम्स ऑफ पार्टिकल्स और लाइट जो है वो स्वेप्ट अराउंड करती है जिस तरह से स्टार रोटेट करता है। तो पीरियोडिसिटी जो पल्सर्स की होती है उससे जो बीम्स ऑफ लाइट होती है वो क्रॉस कर देती है लाइन ऑफ साइट को ऑन अर्थ को। तो पल्सर्स जो है वो प्राइमरली ऑब्जर्व होते हैं रेडियो वेवलेंथ्स पर, ठीक है। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? न्यूट्रॉन स्टार हाईली डेंस रेमनेंट्स होते हैं मैसिव स्टार्स के जो कोलैप्स हो चुके हैं, और ये कई तरह के न्यूट्रॉन्स और अदर एलिमेंट्री पार्टिकल्स इसमें होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन स्टार्स तब फॉर्म होते हैं जब मासिव स्टार जो है वो अपने फ्यूल को जो है वो ख़त्म कर देता है और कोलैप्स हो जाता है। तो ग्रीन बैंक टेलीस्कोप क्या है? ये लार्जेस्ट फुली स्टेरेबल रेडियो टेलीस्कोप ऑन अर्थ है, वेस्ट वर्जीनिया यूएस में लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आफ्सपा। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेंटर और मणिपुर गवर्नमेंट जो है वो रिव्यू करने वाले हैं आफ्सपा का स्कोप इन मणिपुर। तो आफ्सपा जो है वो एक लॉ इनेक्ट किया गया था 1958 में पार्लियामेंट द्वारा, ताकि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स जो है वो दी जाएँ और उनको इम्यूनिटी दी जाए कि वो पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करवा सके डिस्टर्ब्ड एरियाज़ में। तो ये कब अप्लाई होता है? इसको कभी भी अप्लाई किया जा सकता है जब एरिया को डिक्लेयर किया जा चुका हो डिस्टर्ब अंडर सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट। तो एक एरिया को डिस्टर्ब डिक्लेयर किया जा सकता है अगर डिस्प्यूट हो किसी भी रिलीजियस, रेशियल, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स में या कास्ट और कम्युनिटीज़ में। सेंट्रल गवर्नमेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूटी को जो है वो होल या पार्ट ऑफ द स्टेट या यूटी को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और स्पेशल पावर्स क्या आ जाती हैं फिर आर्म फोर्सेस के पास, कि वो किसी भी अथॉरिटी जो अथॉरिटी है वो किसी भी तरह की गैदरिंग ऑफ 5 या उससे ज़्यादा के लोगों को रोक सकती है, और अगर वो फोर्स यूज़ करना चाहे, इवन फायर भी ओपन करना चाहे, तो भी जो है वार्निंग के बाद कर सकती है। आर्मी किसी भी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, किसी भी प्रेमिसेस में विदाउट अ वारंट अरेस्ट जो है वो एंटर कर सकती है, और बैन कर सकती है पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स को। कोई भी पर्सन जो है अरेस्ट किया गया है उसको हैंड ओवर किया जाता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को। और आर्म्ड फोर्सेस इम्यून होती है प्रोसिक्यूशन के से अगर जब तक यूनियन गवर्नमेंट जो है वो सैंक्शन नहीं देती प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नागालैंड, आफ्सपा जो है वो अभी जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर एक्सेप्ट ऑफ कोर्स इम्फाल और अरुणाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is Summit of the Future. This topic is important for your international relations. So PM Modi has recently addressed the Summit of the Future at the UN General Assembly in New York, and the theme of this summit was multilateral solutions for a better tomorrow. So what is UN General Assembly? It was established in 1945 under the UN Charter, and it is headquartered in New York City. It is one of the 6 principal organs of the UN, and it serves as the main policy-making organ of the UN. So it is a unique forum for multilateral discussion where every member has an equal vote. So it takes the key decisions of the UN, including the decision to appoint the Secretary General, electing the non-permanent members of Security Council, and approving the UN budget. Okay, so this assembly also has annual general debate, which provides the member states the opportunity to express their views on major international issues. On this occasion, the Secretary General presents on the opening day of the debate his report on the work of this organization. So 17th UN General Assembly is being held until 30th September, and it will be focusing on accelerating progress towards achieving the 17 Sustainable Development Goals. And this session is being chaired by the Cameroonian President Philemon Yong. Okay, so what is this Summit of the Future? So it is the summit which is headed by the heads of state and government, under which they met at the UN headquarters in New York to address global governance challenges revealed by the recent crisis. So the summit reaffirms commitment to the SDGs and the UN Charter, and the summit also emphasized the importance of international cooperation to tackle global challenges. Okay, the outcome of this summit will include a pact for the future. Okay, so PM Modi addressed this summit and said that the success of humanity lies in our collective strength. He underscored the emergence of cyber, maritime, and space as new conflict arenas, and he called for global digital governance to ensure the protection of national sovereignty and integrity. He also focused on reflecting India's success in lifting 250 million people out of poverty,
He emphasized the importance of reforming international institutions like the UN Security Council, and he cited the example of how under India's presidency of the G20, African Union was included and can be set as an example for future reforms of other multilateral institutions. He also advocated for digital public infrastructure to serve as a bridge for global good, and he offered India's digital infrastructure to the world. Okay. So the next topic is law against child pornography in India. This topic is important for your social issues. So marking a significant move in the fight against child exploitation, the Supreme Court has emphasized that the consumption of sexually explicit content involving minors will be a severe criminal offence under the POCSO Act. So this judgment is basically overruling the judgment of Madras High Court, in which it was held that passive consumption of child pornography did not constitute an offence under the POCSO Act or the IT Act. So what is POCSO Act? It is the first comprehensive law in India which was enacted in 2012 to deal specifically with the sexual abuse of children. It is administered by the Ministry of Women and Child Development, and it is intended to protect children from sexual assault. So in 2019, this act was amended to strengthen the penalties for specified offences to deter abusers and promote a dignified upbringing. So this is a gender neutral law whereby whereby a child is any person who is under the age of 18, irrespective of the gender. There is no time limit for reporting abuse. A victim may report an offence at any time, even years after the abuse has occurred. So this act also forbids the disclosure of the victim's identity in any form of media unless authorized by the special courts established by this act. So the Supreme Court has said that basically they have expanded the interpretation of section 15 of POCSO Act, which deals with the punishment for storage of pornographic material involving a child. So section 15 punishes any person who stores or possesses pornographic material in any form involving a child, and section 15 could even be used to punish the intent to commit such an act. Okay, for instance, the court has said that the failure to delete or destroy or report child pornography would allow the court to indirectly infer that the concerned individual is intending to share or distribute this material under section 15. So basically the Supreme Court has expanded the definition of possession here. The court also termed this constructive possession and held that viewing, distributing or displaying such material would amount to be being in the accused possession under section 15. So the Supreme Court has also asked the Supreme Court has rather recommended the center to replace the term child pornography with child sexual exploitative and abusive material, and it has said that the victims should be provided psychological counseling, therapeutic interventions, and educational support. Okay, so it also has sought introducing cognitive behavioral therapy programs to address the cognitive distortions that fuel such behavior among offenders. It was also asking to identify individuals with problematic such behaviors early and implement intervention strategies. And the public campaigns should be aimed to destigmatize reporting and encourage vigilance within the community. It has also asked to form an expert committee so as to devise comprehensive programs for health and sex education. Okay. So the next topic is spiced scheme. This topic is important for your economy section. So the Union Ministry of Commerce and Industry has approved a spices board scheme, which is named as the spiced scheme. Okay, sustainability in the spice sector through progressive, innovative and collaborative interventions for export development, and it is aimed to significantly enhance the export of spices and value added spice products up to 2025-2026 period. And this scheme will facilitate value addition and drive innovation and sustainability in the spice sector. And the exporters who have a valid certificate of registration as exporters of spices will be eligible for assistance under this program, and the preference will be given to first time applicants and small and medium enterprises. The programs under the components such as improving the productivity of cardamom and post harvest quality upgradation of spices are specifically designed to empower farmer groups. Okay. Scheme activities will also be geotagged, and fund availability, status of application, list of beneficiaries will be published on the Spices Board website for better transparency. Okay.
So the next topic is integrated development of wildlife habitat scheme. This topic is important for your environment section. So recently Union Cabinet has approved the continuation of integrated development of wildlife habitats for the 15th Finance Commission cycle. So this is a centrally sponsored scheme launched by Union Ministry of Environment to boost technological interventions in different thematic areas, especially in tiger and other wildlife habitats. So under this scheme, 55 tiger reserves, 33 elephant reserves, 718 protected areas and their zones of influence are going to benefit. So this scheme will support protected areas, protection of wildlife outside protected areas, recovery programs for saving the critically endangered species and habitats. So there are certain sub-components under the scheme like Project Tiger, Project Elephant, Project Dolphin and Project Lion. Both will be under the subcomponent of development of wildlife habitat. Okay. So the next topic is National Consumer Disputes Redressal Commission. This topic is important for your governance section. So National Consumer Disputes Redressal Commission has declined to give SBI any more time to make submissions on its plea seeking transfer outside the Tamil Nadu of a consumer complaint filed against it by a Madras High Court judge. Okay, so what is this National Consumer Disputes Redressal Commission? It is a quasi-judicial commission set up in 1988 under the Consumer Protection Act of 1986, and it is headed by a sitting or a retired judge of a Supreme Court or a sitting or retired Chief Justice of a High Court, and it shall have jurisdiction to entertain a complaint valued more than 2 crore rupees and also have appellate and revisional jurisdiction from the orders of state commissions or the district fora, as the case may be. So the provisions of this act cover goods as well as services. And who can file a complaint? Any consumer, a voluntary consumer organization, the central government or any state government, or even one or more consumers where there are numerous consumers. So any person aggrieved with by the order of this NCDRC can approach the Supreme Court within a period of 30 days. So the next topic is pulsar. This topic is important for your science and tech section. So using the Green Bank telescope, astronomers have detected a new millisecond pulsar associated with a recently observed globular cluster known as TARZAN 6. So pulsars are rapidly rotating neutron stars which blast out pulses of radiation at regular intervals ranging from seconds to milliseconds. So pulsars have a strong magnetic fields. They produce very powerful beams of light. Their magnetic field is not aligned with the spin axis, so that's why the beams of particles and light are swept around as the star rotates. The periodicity of pulsars is caused by these beams of light crossing the line of sight on Earth, and pulsars have primarily been observed at radio wavelengths. So what is a neutron star then? So neutron stars are highly dense remnants of massive stars which have collapsed. They are composed of mainly of neutrons and other elementary particles. So neutron stars are formed when a massive star runs out of fuel and collapses. So what is this Green Bank telescope? So it is the largest fully steerable radio telescope on Earth, and it is located in West Virginia of the US. Okay. So the next topic is AFSPA. This topic is important for your security section. So Center and Manipur government are set to review the scope of Armed Forces Special Powers Act in Manipur. And what is AFSPA? It is a law enacted by the Parliament in 1958, which gives the armed forces special powers and immunity to maintain public order in disturbed areas. So this act can be applied only after an area has been declared disturbed under section 2 of this act, and any area which has differences or disputes arising among different religious, racial, language or regional groups or caste or communities can be declared as disturbed. So the central government, the governor of a state or administrator of UT can declare any part or the entire state or UT as a disturbed area. So once the area is declared as disturbed, special powers are given to armed forces. They basically get the authority to prohibit a gathering of 5 or more people in an area. They can even use force or open fire after giving due warning. The army can also arrest a person without a warrant, enter or search any premises without a warrant, and even ban the possession of firearms.
So any person arrested or taken into custody may be handed over to the officer in charge of the nearest police station. These armed forces are also immune from prosecution unless the union government provides sanction to the prosecuting agencies. So apart from Nagaland, the AFSPA is currently in force in Jammu Kashmir, Assam, and Manipur, of course, except the capital is Imphal, and also in Arunachal Pradesh. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.